Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, our daily food. Observe the variety of food eaten by your classmates during the recess time. Now complete the table accordingly. अपने classmate के आप name लिखेंगे and वो अपने lunch meal में कौन कौन से items include करते हैं. There is lot of variation in the food eaten in different regions of India. Different people in India eat different types of food according to their हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी. अब इंडिया के डिफरेंट रीजन में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाया जाता है. वो डिपेंड करता है लोगों की हैबिट्स क्या है, टेस्ट, लाइफस्टाइल और अवेलेबिलिटी. व्हाई वी नीड फूड? वी नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. हमें खाने की आवश्यकता होती है एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करना होता है और डिसीज़ को के अगेंस्ट जो है फाइट करना होता है. फूड वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस एटलीस्ट वन टाइम डेली और सम मे लाइक टू हैव इट इन बोथ द टाइम. साउथ इंडियन फूड में इंक्लूड इडली और डोसा एटलीस्ट वन टाइम. फिश इज इंक्लूडेड इन द डेली फूड ऑफ बंगालीज. अच्छा देखिए, साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो अपने डेली डाइट में से एक टाइम तो जो है वो चावल खाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि 2 टाइम भी वो चावल खा लेते हैं. और इनकी डाइट में आपका इडली और डोसा तो एटलीस्ट एक टाइम बनता ही है. इसी तरह से फिश जो है वह बंगालीज के डेली फूड आइटम में इंक्लूडेड होता है. People in Kashmir would like to eat meat at least once in a day. People in Gujarat have the habit of putting jaggery in a number of recipes. People in Europe, America and Africa and some Asian countries are usually meat eaters. Their daily food includes meat in their diet. They have egg, fish, meat, pork or meat of any other animal in their diet. इसी तरह से देखिए, कश्मीर के जो लोग हैं वो दिन में एक बार जो है मीट ज़रूर खाते हैं. एंड जो गुजरात के लोग हैं वह अपने बहुत सारे खाने में जो है जैगरी यानी कि गुड़ डालते हैं. इसी तरह से आपकी जो यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका या कुछ एशियन कंट्रीज हैं इनमें मीट ईटर्स भी होते हैं, राइट. डू यू नो व्हाट? When we eat only vegetable in our food, then the food in person is called vegetarian. When our food consists of non-vegetable items like egg, chicken, meat, etc., then food and we are called non-vegetarian. देखिए, जो लोग सिर्फ वेजिटेबल्स अपने फूड में खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं उन्हें कहते हैं वेजिटेरियन. और जिनकी फूड में मीट, फिश, एग्स ये सब भी इंक्लूडेड होता है उन्हें कहते हैं नॉन वेजिटेरियन. फूड वैरायटी. डू ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड? Table 1.1 contains the name of several living organisms and examples are given of the type of food that some of these organisms eat. अच्छा देखिए, क्या सारे एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट क्या सेम तरह का खाना खाते हैं? तो देखिए, टेबल आपको दी गई है, इसमें आपको नेम ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं और किस तरह का वो खाना खाते हैं, राइट. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं. When we talk about the food variety, we not only mean the different types of recipes, but also the nutrients which we get from the food. A vegetarian food may contain rich vitamins and minerals beside containing a number of tasty recipes. The different food variety in a vegetarian type of food may include soybean, dal, mushroom, peas, sprouted seeds like chana, moong, honey, butter, etc. Boiled soybean, moong dal also serves a light and rich nutritious food. A non-vegetarian food, on the other hand, may contain a variety including goat meat called meat of pig called pork, beef, fish, prawn, eggs, etc. तो देखिए, जब हम फूड वैरायटी के बारे में बात करते हैं ना, तो इसका मतलब कि हम डिफरेंट रेसिपीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उन फूड से हमें मिलते हैं उनके बारे में बात करते हैं. जैसे कि देखिए, जो वेजिटेरियन फूड में काफ़ी सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ओके. जैसे कि वेजिटेरियन टाइप ऑफ फूड आपके हैं दाल, मशरूम, पीज, स्प्राउटेड दाल. नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में आपका फिश, आपका बीफ, पोर्क ये सब हो जाता है. The food we eat may consist of recipe made from a number of vegetables like potato, tomato, onion, brinjal, gourd, etc. Again, a number of spices are put in any preparation we make in our kitchen. अच्छा देखिए, हम जो भी खाना बनाते हैं अपने किचन में, उनमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे जो है स्पाइसेस आपके डले हुए होते हैं, है ना, यानी कि मसाले. इस टेबल को आप खुद से करेंगे. Food habits of animals. On the basis of food and eating habits, animals can be categorized into 3 categories. Herbivores. Animals which are fed only on plant products are called herbivores.
cow, goat, buffalo, horse, sheep, etc. herbivores. The teeth of herbivores are specially designed to grind the grass in the plant product. You can see the animals grazing in the field. देखिए वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हम कहते हैं herbivores. Carnivores. Animals which depend on animals for food are called carnivores. Lions, leopards, tigers, hyenas and vultures are carnivores. Carnivorous animals are found to have sharp canines and claws for tearing the flesh of animals. Some birds are also found to be carnivores. They have claws and sharp beaks. अच्छा जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो आपके कार्निवोर्स होते हैं और इनके जो किनाइन्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, क्लॉज भी काफ़ी शार्प होते हैं जिससे कि फ्लैश को टीयर कर सके. ओके एंड कुछ बर्ड्स जो है आपकी वो भी कार्निवोर्स होती है तो इनके क्लॉज और बीक्स काफ़ी शार्प होते हैं. ओमनिवोर्स. देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज animals. Such animals are called omnivores. Man, dog, bear, etc. are omnivores. अच्छा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं तो उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स. फॉर एग्जांपल्स आपका मैन, बेयर, डॉग ये सारे आपके ओमनिवोर्स हैं. Sources of food. The food is made up of 2 or more materials added together. Example, cooked rice is made up of rice, salt and water. These materials are called ingredients of food. Let us study some food items and see what ingredients these food items contain. Let's do an activity. देखिए जो हम खाना बनाते हैं वो एक्चुअली 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से बना होता है. जैसे कि कुक्ड हमारा जो राइस है वो किससे बना होता है? राइस, सॉल्ट एंड वाटर. और ये जो मटेरियल्स हैं इन्हें कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. Let us study the food items like kheer, dosa and mutton and find the ingredients used in them. Find out their source and write them in the table given below. देखिए जैसे खीर में है आपका फूड आइटम है खीर. इसके इंग्रेडिएंट्स है राइस, मिल्क, शुगर. अच्छा राइस का जो सोर्स है वो तो प्लांट से मिलता है. मिल्क, वेयर डू वी गेट मिल्क फ्रॉम? वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल, है ना, ये एनिमल से आपको मिलता है. एंड शुगर, शुगर आपकी शुगर केन प्लांट से मिलता है तो ये आपका प्लांट ये सोर्स है. राइट इसी तरह से डोसा, डोसा के इंग्रेडिएंट्स दिए हैं. ये कौन से सोर्सेज हैं? प्लांट है या एनिमल है? इसे आप खुद करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडी वी कैन सी दैट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड आइटम्स आर ईदर ऑफ प्लांट ओरिजिन और ऑफ एनिमल. We can group the food into 2 main categories depending on the source they come from. Food from plants. Man has been dependent on plants for food from very early days. The vegetables, cereals, pulses and the fruits that we eat have plants as origin. That is why they are part of a plant. In plant, the food is stored either in the leaves, stem, root or its fruits. देखिए प्लांट्स पे सभी जो एनिमल्स हैं ना काफ़ी लंबे अपने पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से डिपेंडेंट है. ठीक है प्लांट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं लाइक वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेस और क्या कुछ नहीं है. प्लांट में जो फूड होता है वो स्टोर हो जाता है या तो लीव्स में, स्टेम्स, रूट्स या फिर उसके फ्रूट्स में. In a plant of lady's finger, gourd, brinjal, tomato, pea, etc., the food is stored in the fruit of the plant. Potato, ginger and sugarcane are stem of their plants. Radish, turnip, beetroot are the root part of the plant, whereas spinach is the leaves of the plant. We eat seeds of some plants. The cereals and pulses that we eat are the seeds of the plants. Cereals include rice, wheat, corn, bajra, etc. Pulses include green gram, black gram, chickpea, etc. Apple, mango, guava are fruits of their respective plants. We get oil such as mustard oil from the seeds of their respective plants. Tea and coffee used as beverages are also plant products. तो देखिए आपके बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल हैं जिनका हम फ्रूट पार्ट खाते हैं. बहुत सारे वेजिटेबल ऐसे हैं जिसका हम स्टेम खाते हैं लाइक पोटैटो एंड आपका शुगर केन है. ओके और कुछ ऐसे वेजिटेबल हैं जिनका हम रूट खाते हैं लाइक रेडिश, कैरेट और कुछ ऐसे हैं आपके जैसे स्पिनच है इसका हम लीव्स खाते हैं. कुछ प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं लाइक आपके जो सीरियल्स एंड पल्सेस हैं ये क्या है? प्लांट्स के सीड्स ही तो है. और इसके अलावा ऑयल जो है हमें सीड से मिलता है प्लांट के. टी एंड कॉफ़ी ये भी आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं. Sometimes in our breakfast we take sprouted grains which are rich source of proteins. But how can we prepare sprouted grains? Let us do an activity. Activity 2, preparing sprouts. Put some dry gram seeds in a container filled with water. Keep this container aside for 1 day. Drain the water the next day and keep the soaked gram seeds in a piece of wet cloth. After 1 day, you will observe that small white structures have grown out of the seeds. These are called sprouts. These seeds can be consumed after washing. You can also boil these seeds and eat them after adding some spices. अब आपको देखिए sprouts prepare करने हैं. आप लोगों ने कभी तो sprouts खाए होंगे अपने breakfast में या किसी भी meal में include किया होगा. आपने dry gram seeds को यानी चने की
जो सीड्स हैं उन्हें लेना है कंटेनर में जिसमें वाटर हो। इसके बाद आपने इस कंटेनर को एक दिन के लिए साइड कर देना है। फिर नेक्स्ट डे आपने इसमें से पानी को ड्रेन करना है और जो आपके ग्राम है उससे आपने डालना है एक वेट क्लॉथ में रखना है। फिर एक दिन के बाद आप देखेंगे उसमें से वाइट स्ट्रक्चर नज़र आएगा, तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर है एक्चुअल में आपके स्प्राउट्स होते हैं। अब आप इन सीड्स को वॉश करने के बाद भी कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप इन्हें बॉईल करके उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके खा सकते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स। There are many animals which provide us food. We get milk from cows, buffaloes and goats. Milk is rich in proteins and fats. We call it a complete food because it contains all essential items that a good diet should have. Milk can be used to prepare a variety of products like curd, cheese, ghee, sweets, etc. देखिए एनिमल से आपको मिल्क मिलता है ना, और ये मिल्क आपको पता है मिल्क तो रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स है। इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल आपके आइटम्स पाए जाते हैं और उसके बाद मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लाइक कर्ड, चीज़, घी एट्सेट्रा। We get eggs from hens and ducks. Eggs are rich in proteins. We eat the meat of goat, sheep, chicken and fish. Meat is rich in proteins, vitamins and minerals. अब जो देखिए मिल्क के अलावा हमें एग्स भी मिलते हैं एनिमल से, हमें मीट भी मिलता है और ये दोनों ही सोर्स आपके प्रोटीन्स, वाइटामिन्स के हैं। Do you know what? Rearing the cattle like cow, goat and buffalo is called husbandry. Rearing hen and cocks for egg and meat is called poultry. देखिए जब हम एनिमल्स को पालते हैं जैसे काउ, गोट या बफलो को, तो उसे कहा जाता है हस्बेंड्री, राइट। और जब हम हेन्स एंड कॉक्स को एग्स एंड मीट के लिए रियर करते हैं तो उसे कहा जाता है पोल्ट्री। To meet the demand for proteins, many varieties of fish are now being cultivated in ponds. The young ones are hatched from eggs in shallow artificial tanks. They grow to a certain size before they are transferred to ponds for further development. Okay, अब जो देखिए फिश को भी कल्टिवेट किया जाता है पॉन्ड्स में, तो जो यंग वंस हैं जो एग से हैच होते हैं उनको रखा जाता है शैलो आर्टिफिशियल टैंक्स में और उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है पॉन्ड्स में उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। Notes for the chapter: food variety. There is a lot of variety in the type of food that we eat. For example, we commonly consume rice, chapati, dal, many vegetables and fruits. Ingredients: the materials that are required to prepare a food item are known as the ingredients of the food item. For example, pulses, water, salt, oil, ghee, spices are required to prepare dal. Therefore, all these are the ingredients of dal. Sources of food materials. Various food materials are obtained from either plants or animal sources. Plant sources: food materials such as wheat, rice, vegetables and fruits are obtained from plants. Animal sources: food materials such as milk, eggs, meat, pork, honey, etc. are obtained from animals. Cow, goat, buffaloes, etc. give us milk. Honey is obtained from honeybees. Parts of plant as food. Food items such as strawberry, tomato, chili, brinjal, etc. are obtained from fruits. Food items such as turnip, potatoes, etc. are obtained from roots. Food items such as cabbage, spinach are obtained from leaves. Eating habits of animals. Animals such as deer, goat, rabbit, etc. that eat plants only are known as herbivores. Animals such as lion, tiger, lizard, etc. that eat other animals only are known as carnivores. Animals such as pig, dog, etc. that eat both plants and animals are known as omnivores. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।